terms, Linux is an open source operating system, whereas Windows is a proprietary operating system, meaning that Linux source code is all Linux, the creator of Linus Torvalds, created the Linux using some source code, and that source code is visible to all of the world to see and to use it, and change and by changing it, you can create a different by changing its Linux kernel, that is the main code on which Linux works. You can create different types of Linux distributions. So basically, that is the idea of open source operating system, where you can see how the operating system is made, and then you can then every developer from the world can see, understand the code, and then change it as per the requirement. So on the other hand, Windows, which is a proprietary operating system, is basically it basically means that its source code is not visible for us to see. Only the company owning the operating system knows what's in the code. So that is the main difference between Windows and Linux. Just as a layman terms, you can understand that Linux can be seen by everyone as how it is used, whereas Windows, you don't know what code is used in Windows, and what is by using what it is made. So that is the main idea behind Linux. There are several pros and cons of using Windows or Linux, and I will go through them. Once. Then I will go on the main part. So basically, what the thing is that Linux, as being an open source operating system, is always viewed by the developers around the world. So basically, it is considered as one of the most secure operating systems, due to the simple fact that people around the world can always check what the code is, and if there is some possible errors in the code, or if there is a possibility that the code is bugged, they keep on solving it regularly, so that any of the chances of misusing of that bug can be reduced. So basically, that makes Linux more secure than the Windows. Then Linux is also used by many popular web servers around the world. The Linux kernel can be used for many ways. The Linux kernel can be used for basically creating servers, managing servers, or you can also use Linux as a desktop operating system for your day-to-day uses. Also, when Windows is also compatible, but some servers basically are developed on Linux, and so it is best so that you it works on it. Now, also there are some cons of the Linux, which are like many of Windows being the most dominant operating system. Many of the more used softwares are not compatible on Linux currently. For example, Adobe is not that compatible on Linux, whereas on Windows or any other you can use it. And there is a huge community of Linux, but still there are very limited documents on various uses of various apps on Linux. And for example, some games that you can play on Windows, you can't play on Linux because of the simple fact that Windows has some drivers that cannot be used on Linux, and the games are made for that drivers. So sometimes such like for various softwares, you can't use Linux, and for day-to-day use, for people who don't have that much use of the command lines, so command line systems and stuff, Windows is much better choice because of its simplicity. Now, that being said, you might have understood about about a simple thing about Linux and stuff. Now, there are various, as you are using currently, most of you would be using the Windows on your system. Now, in same way, Linux has to be installed on your system, just like a Windows is. But there are several ways of installing the Linux on your system. And today we are going to cover mainly three ways, three popular ways how to install install Linux on your current Windows or either Mac systems. So those three are being, first, the most popular one which is used is the Virtualbox, by using Oracle Virtualbox. So basically, this is the concept of like virtual machines, and these virtual machines can enable
enable you can enable you to run various types of different operating systems in by without affecting your current operating system, main operating system that you are using. That is the main idea behind the virtual machines, and the most popular for of them being Oracle VirtualBox. And the second that is the first method of using the Linux on system. Now the second way of using the of installing Linux on a system is by installing it beside your current operating system. That is dual. It is basically known as dual boot installation. That is, you can by during the boot you can change in either of the operating systems you want. That is, you can also use Windows and Windows, or either you can boot into Linux as a whole different operating system like you are using Windows. So basically the difference between the first and the second method is that in the first method you will be in your home operating system, that is suppose Windows, and in that only you will be running a virtual machine which will be running the Linux. Whereas in the second method you will use either of the operating system at the same time, that only once. That is, you will use either complete Linux, or you boot into Windows to use boot. Now, and I will explain the pros and cons of that which method to use after I tell you about the systems. The third is by using a thing called as Workstation Manager, which is kind of same as the VirtualBox, but it is majorly used. So we will cover that also. So first of all, I will cover the first method, that is by installing Linux on the VirtualBox manager. Um, is the screen visible? Yes, yes, it's visible. Yes. So as I told you that Linux is an open source operating system. You can see that this is basically the GitHub page of Linux, where you can see its source code, and various people around the world see this source code and change it. So this is like the main code of Linux. Now, first of all, now we will talk about installing Linux on a system. So first, so there is a thing called VirtualBox Manager. So you need to install the Oracle VirtualBox first. So we will provide the link to that every installation part. But first of all, this is the website from which you will install the VirtualBox, and from that. You have to for if you are using Windows, then just click on this Windows host and it will install a Windows executable file in order to install the VirtualBox. And if you are using Mac, then click on OS X host. So because your operating system is OS X, so OS X host is for Mac. And so when you will click it, it will install the executable file like this, and it executable file will be installed. And after and that you can simply install as you install other Windows files. I have installed, so I'm currently canceling it. And the second thing you will install, if you are in order to use in order to use your USB, and in order to for a card for the card drivers, you will install this all supported platforms. That is, and it will install a VirtualBox extension file, which will enable you. Now the main use of this is in order sometimes some of you may be using this in order to like work upon various stuff. And so as it is shown that by using this you can have a support for the USBs that you install in your in the system, and use it in the VirtualBox, and that will enable it to use. Otherwise you have to install the drivers manually yourself, and that is not that easy task to do. So this installing it will do the work. Now in order to use now after you will be installed, something like this will pop up. This is the Oracle VirtualBox Manager. This is the main part where you will be installing the Ubuntu. That is, the Ubuntu is a distribution of Linux, as I told, and that is the most user-friendly distribution of Linux for the people translating from Windows to Linux systems, and it is easy to understand. Now, first of all, nothing will be there here. This is I have used here created, so here there, but this part will be empty first. Now I told you to install this
this is extension pack. When you install the extension pack, something like this will happen. Now when you double click it, it will directly open into the Oracle VirtualBox, and here I have installed it, so it is showing very installed, but for you it will be installed. Just click on install and it will install itself. You have to nothing to do in there. Now the main thing to install any of the operating system is the ISO file. That is ISO file is the file that are used that contains the information about the boot information about any operating system. So when you install any operating system other than our main operating system, the main thing that you will use, the main file you will use is the ISO file. So for Ubuntu, that is for every Linux distribution has its own ISO file. Like if, for example, Ubuntu has its own ISO file. Fedora, which is another distribution of Linux, has its own ISO file, and MintOS and all that stuff has had its own ISO file. So if here we are covering about Ubuntu, so we will install the Ubuntu ISO file. So by searching Ubuntu ISO file install, you will be redirected to the you will be redirected to this page where ISO where you have the download option to here to download the LTS version, because it is a long time support version, so it won't change for a long time, and so you don't have to install it again in a short amount of time. So that is the LTS version, and this is Ubuntu 21.2. This is the beta current latest version, but we are going to cover the long-term support version. So the long-term support version. Now by clicking on the download, you can install it, but this file is around 2.5 or some gigabytes, so it is a larger file to download. So I have already downloaded this file. But when you will download it, something like this will download Ubuntu something desktop AMD64. Now this is the main ISO file that we will be using for the installation of Ubuntu. Now, for example, if you want to install any other distributions, then you can just simply search the ISO file for the distribution, and the only one step will be changed. The overall installation. Now, in order to create a new system here, so here basically what is this all are these virtual machines that will be installing in your manager. You can install Just a any minute, of the Ajay. Sorry to interrupt yes. you. Yeah, just a minute. इसको अभी इंस्टॉल करने मत बैठना आप लोग, otherwise it will take a lot of time. And one more reason is कि in this session we'll be covering 2 to 3 methods of setting up Linux on Windows. तो एक बार पूरा देख लो and then find out which is the best for you. मतलब अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा फिजिबल है, फाइंड दैट आउट और उसके बाद इंस्टॉल करना. इसका रिकॉर्डिंग और इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हम दोनों शेयर कर देंगे आपके साथ. अभी बस देख लो and just figure out that which method is most suitable for you. Go on, Ajay. Okay. So in order to add any of the virtual machine to your VirtualBox manager, just click on new. So you have to these will ask you to create a virtual machine. Now you can name it anything you want. So I just will be naming Ubuntu the current version, and just for example 4. Now the folder which this is the folder. If you don't have any good reason to change, then keep it as it is. Now when you type Ubuntu, it will recognize that in Linux version that you want to install. Suppose for if any of you it doesn't pop up, just go into this select Linux, and in this you have to select Ubuntu 64-bit, because 64-bit or 32-bit, that will be dependent upon your system. If you're using a 32-bit system, download the 32-bit ISO file and select 32-bit. It will be dependent upon your operating system. Now when you click next, it will ask about the memory size. So so here the recommended this will be asking you what is the minimum recommended memory that you should allocate for a virtual machine to run. So if for example here I have 16 gigabytes of RAM, so I can use any of the RAM I want to between that. So it is recommended that you use for 8 gigabyte 8 gigabyte RAM systems. You can use 4 gigabyte, and that is completely completely perfect to use, and it will work completely fine in 4 gigabytes, and that is recommended. So try to use that.
You can increase as per our requirements from the settings, and I will show you next. Now here just click, go on to click create. Don't change anything here, and just click create. Now in the hard disk file type, select the VirtualBox disk image because we have downloaded the ISO file of the image. So use VirtualBox disk image in the hard disk file type. Now here in physical hard disk, there is you have to choose between dynamically and fixed size. So in this, what here it means that whenever you when it will be creating a basically a folder in your system in order to store all the files. And if you are going to use the Linux for a long amount of time and you might have to increase the size, then using dynamically allocated is a good is a good option. Otherwise, if you know that you are going to be using it for you're going to be using it just for using it, so this use fixed. Now I am going for dynamically. It doesn't matter, it just depends upon how you are going to use it. Now this will ask about file location and size. So this is where it will ask about where to store your file. Now you can keep it as default, and nothing will be changed. And here, what is the amount of file you have to give. So typically typically for normal uses 20 to 30 gigabytes our allocation is enough. But if you are going to use it for you're going to use it more, then you can increase as per our capacity of the system. But 20 to 30 gigabytes is recommended. Now when you will click create, so this the name that you give it to a virtual machine will be appeared in the list here. Now this means that just your virtual machine profile is created. Now you need to set the ISO file that we downloaded in order to show in order to specify the boot file of this system. So am I audible? Yes, Advait, you are. Okay. So here first of all, what we will do is we will go into storage. Then in the controller section, go into empty and click on this disk image that is shown. Now here, this will ask to choose or create a virtual optical disk or choose a disk file. Now, as we have downloaded the Ubuntu ISO file from the website, you can select choose a disk file, and then you can just choose it from where you downloaded. So so this will appear here. Now in the settings section only, go to system. In the system, go to processor and change increase the amount of processor to 4 because it is the recommended and it will what we can say, it will smoothen the processes that are processes of the Ubuntu, and it will make it fast. Now now one another thing is, in general section, go to advanced, and in the shared clipboard, convert it to bidirectional and drag and drop to bidirectional. The main reason we are doing this is because in the virtual machine, you will be using your Windows and Linux side to side. So in order to if you copy something copy something in Windows and you have to use that in Linux, so by using this, you will be able to do it, or you can also drag and drop the files from Linux to Windows or vice versa using this option. Advait, just a minute. Your presentation is not visible. I guess he has left the meeting because of some network issues. Just a minute. भैया भैया ऐसा करने से कंप्यूटर की स्पीड अफेक्ट होती है अगर अपन ऐसे वर्चुअल बॉक्स यूज करते हैं क्योंकि मेमोरी शेयर हो जाती है. Just a minute. We'll get back to your question. Audible?
Am I audible? Yes. Yes. Okay. Okay. So Webex crash. Sorry for that. Okay. So is my screen visible? Yes, it's visible now. Okay. So we were here. So basically, now after you have made the virtual machine manager, now you can just now here we can click on start after using the ISO file. So here is a part we will be setting up. We will going into the installation of the Linux itself, Ubuntu itself on this file, and so that you don't have to install every time you start it. So this step remains same for every of the operating system we will be installing in future in this virtual machine. Now, so firstly during the installation, some steps will take time, and then after you have installed it, it will be simply you have to log in and stuff. So while it is happening, I will quickly tell you about the second method, that is the using dual boot system. So basically, the thing is that in dual boot system, you will be setting your system in order to boot the either of the operating systems side by side. That is, either you can completely boot into Linux or either you can completely boot into your Windows or a Mac and stuff. So like that part we will not be covering today in this, because that involves various disk partitions and stuff in Windows, and that might change depending upon every of the system that you are using. So for some people it may be different from what I have, and then that might create us problems in your disk or Windows and stuff. So that being a risk, and you can do that when you know what you are doing with the partition and stuff. So currently, this being just an introduction session, we that becomes too risky to show, and so too risky to set up for everyone. So we will not be covering that part. And the main reason being is it all has to do with the Windows disk partition and BIOS stuff. So that is the main reason we are not going to be covering that part, dual boot part, but we'll be covering the VM workstation part. Um, so after it will take some time in disk checking and stuff. And after that we will work upon installing it. So in the first step, this will take some time. Then it will not take that much time. So this is the test version of the Ubuntu. Now you can try it before installing the Ubuntu completely, that how it works on a system, and then you can install or not install it as per your choice. So here first of all it will take some time. So you have to wait for some time for that, and then we can go on installing it. Okay, so first of all, when you will run, you will get this option, try Ubuntu or install Ubuntu. So what the try Ubuntu will do is, it from the ISO file that you have downloaded, it will show the test version of Ubuntu, in which you can try out different basic apps and see how it works on a system, and then you can choose whether to install it or not. So here we will be installing Ubuntu, as we want to install it permanently. And after clicking on it, it will ask about the keyboard layout and languages. If you can change it as per your keyboards and stuff. Now here, in this case, what you have to do is keep it as it is. But here, the install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware and additional media format, these you have to check mark, because what it will do is, if you are using Wi-Fi in your Windows system, then it will require some drivers in order to work in that Linux. And what this will do is, it will install the drivers for you, so that you don't have to install it manually by using the terminal and stuff. So you have to select this option, and so that it will install it as you do it.
it will take a little time to download, install it for the first time, and then first time. So I have to keep on waiting for that. While that so here, when here in this case, we are downloading it on our we have properly allocated a file size. We have properly allocated a folder for its installation. So you can simply do erase disk and install Ubuntu, and it will not affect any of your Windows stuff, but it will just work in it the file we provided. So we can currently in the virtual machine part, we can just keep this as it is and keep on install now. Now, if some of you who want to here we will do continue, but some of you who want to set up the partitions yourself, or if you know how to set up the partitions in Linux, or you have to customize it, then you can click on something else and you can do it yourself by referring anywhere. But that is not required, so we are not doing that now. So here location, just choose your location, and then here here to just do it as you require. So I'm just using currently any name and password to just show you. Here you can keep it as you require it. Use Active Directory will be is a little unrequired thing, but if you want to, you can do it. And then you can just click on continue, and now what will happen is it will keep on installing. It will install Ubuntu, and this step takes about 15 to 20 minutes of time depending upon the system. So this is the part where you wait, and after this installation, after this our Ubuntu will be installed, and we can use the Ubuntu as you need. So until this installs, I will just quickly cover what is done in the dual boot part, and then we can just move upon the third method to install, because this will take some time and we won't have to wait and see it to install. Basically, this is the steps you do to install the virtual machine, Ubuntu or any of the Linux distros you want to use on virtual machine. All the step remains the same, but only the step were only changed. For example, if we download Fedora ISO file, then the only step where it will change is in the settings where we chose the ISO file. And then for every Linux system, mostly the initial installation part will be same, unless you go for very higher distros like Arch Linux and stuff. So mostly this will remain this part will remain the same, and for every virtual machine you want to install, only 2 or 3 steps would change, that is ISO file and stuff. So now now the second method I told was the dual boot part. Now that part is basically for people. So I will tell about the difference between the methods in order to which method you should use for on which type of systems. But that is now what does virtual machine is you what is the virtual machine does is it uses the resources currently of your system that you allocate it, that much it will use. For example, we allocated 8 GB RAM or 4 GB RAM as recommended in the recommended here, and then so it will use 4 GB RAM, 4 GB only, and for example we have allocated 30 TB, so it will use 30 TB memory, 30 TB space, and 4 GB RAM in order to do all the functions. And so virtual machine will be like another app running on a current operating system, and that app will be the different operating system that you are using. So that is mean what is virtual machine does. And what does dual boot do is it is completely like another standalone operating system that you are using in a system. For example, you currently boot up into Windows, and that is the operating system you use. But in dual boot, what you do is you either choose what to you boot in, then Linux will be like another operating system that you will be using, and that will be and that will use every resources that their PC has, and so what happens? The difference between the two methods is that if you want to understand how the Linux natively works on any system, then running the dual boot is the best way to go. But that is done when the system's capacity is low, as Linux is very much improvised about using the system resources. Using it on the old systems like i3 and all that stuff will speed up your system, and
it won't take as much load as Windows takes by using the resources. Linux is very much improvised on resource using system resources, and you can use the virtual machine whenever you don't want to install a whole another operating system in the system, and you want to just completely you just want to use the Linux temporarily in your system. Then you can choose then you can choose virtual machine or that VM workstation manager that we will cover we will cover after this. So that is the main difference between the first two virtual machine and workstation manager and the dual boot system. So currently this will take some time to install. So unless this is installed, Adit will switch over and show you how to install it in the workstation manager. Yes. Like I guess this is the last step of the setup. Once this gets installed, you can just start the system. It may ask for a restart. If needed, you can restart your PC, and it will just start working after that. So Advait, you can stop sharing your screen. I'll be going over the next method. Yeah, is my screen visible? Okay. Yeah, so just to give a brief intro about myself, I'm Adit Shah, currently a BTech third year student, and I'm currently serving as deputy convener of MSTC. So, एक method तो, as Advait explained, is using Virtualbox from Oracle, and other method is using this VMware Workstation player. It is very similar steps which we saw in Virtualbox, but थोड़ा बहुत change है which we'll be going through. It's quite analogous. It's just like मतलब दो companies ने बनाया है तो थोड़ा बहुत minor changes है. बाकी at the end of the day they are meant for the same use. Okay, so once you install this VMware Workstation player, we'll be sharing the link to install this in the mail with you. So let's say you have installed this, and after this installation of VMware Workstation player, you can just click on this option, create a new virtual machine. अगर आप लोगों के पीसी में फर्स्ट टाइम व्हेन यू ओपन इट यू वोंट फाइंड दिस ऑप्शन. ये मेरे में इसलिए बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड वन वर्चुअल मशीन. व्हेन यू ओपन इट आप में यहाँ पे सिर्फ होम दिखेगा. Yeah, so just to move ahead, you can click on create a new virtual machine. Select this option. I will install the operating system later. Next. हाँ, और इसके लिए भी you need to download the .iso file which Advait had mentioned about Ubuntu के लिए, which contains the system image of Ubuntu. Yeah, so which guest operating system we want? It's Linux, and what we want? You have this many options, but अभी हम लोग Ubuntu का कर रहे हैं, so let's keep it as Ubuntu 64-bit. Next, you can keep the name of virtual machine as whatever you want. Let's say Ubuntu 64-bit MSTC. It will be the name that will be displayed here. मतलब इधर Ubuntu 64-bit है, मतलब उस वक्त बनाते वक्त Ubuntu 64-bit रखा होगा यहाँ पे. This is the location. Unless you have any good reason to change it, मत करना change. Disk size you can keep it 20 or 30. Yeah, recommended is 20. So 20 30 आपको जो भी मतलब ठीक लगे you can keep that. 20 से कम मत रखना. Recommended 20 means. Let's say I'll make it 30. Then you have to select this option, split virtual disk into multiple files. स्प्लिटिंग इसलिए जरूरी है ताकि थोड़ा मतलब मैनेज रह सके सब कुछ. सिंगल फाइल में होगा तो मैसी हो जाएगा थोड़ा. You can go to this option, customize hardware. Memory requirement is 4 GB. ये तो मतलब हमने जो Oracle VirtualBox में देखा ऐसा ही है. 4 GB RAM, processors 2, and in this new CD DVD we'll use an ISO image. और उसमें हमने जो Ubuntu का जो ISO फाइल डाउनलोड किया है Ubuntu of version 20.04.3 उसको यहाँ पे रख देंगे.
This is the Ubuntu ISO file. You can keep other options as they are. इसको कुछ change करने की ज़रूरत नहीं है. Click on close. And I guess that's it. Finish. Play virtual machine. This step may take some time. By the time this step gets completed, we can just take 1 or 2 questions. भैया Yes. भैया कैन आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? अरे एनीथिंग इज फाइन. हिंदी, गुजराती, इंग्लिश कुछ भी चलेगा. बोल बोल. भैया जब हम ऐसे वर्चुअल बॉक्स इस तरीके से यूज करते हैं तो हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है ना, क्योंकि रैम डिवाइड होती है तो. हाँ. एंड दैट्स द रीजन कि हम लोग अगर रैम पीसी का कम है, लेट्स से ऑलरेडी 8 GB रैम का पीसी है, देन इट्स नॉट रिकमेंडेबल टू यूज वर्चुअल मशीन इन दैट पीसी. नहीं पर क्योंकि यू सेड मतलब अगर 16 GB के रैम हो तो भी अगर अपन ड्यूल बूट यूज करें. हाँ कर सकते हैं. 16 GB के रैम में भी डुअल बूट यूज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड. मतलब डुअल बूट का इंस्टॉलेशन थोड़ा सा मैसी है ये वर्चुअल मशीन से, और उसमें ऐसा है कि एक भी गलती हो गई देन इट में वाइप आउट ऑल योर डेटा. मतलब अभी तक जितना भी तुम्हारे पीसी में पड़ा है विंडोज ओएस में, वो पूरा वाइप आउट हो सकता है डुअल बूट का सेटअप करते करते. तो अगर नहीं, 16 GB रैम या ज़्यादा अवेलेबल है तो विल रिकमेंड के वर्चुअल मशीन यूज करो. ये इतना स्लो नहीं करेगा 16 GB सर रैम में. ड्यूअल बूट में आपका स्टोरेज सेपरेट हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइड हो जाएगा ना. नहीं तो एक्सटर्नल एसएसडी अपन अगर एक्सटर्नल एसएसडी लगवाते हैं और अगर अभी नया सिस्टम ले रहे हैं और अपन किसी एक्सपर्ट से काम करवाए ड्यूल बूट का स्टार्टिंग में. See, yes, हाँ ऐसा you स्टार्टिंग can से do that. या अद्वैत. You can do that. अगर तुम्हारे पास अगर 2 हार्ड ड्राइव अलग अलग है, so and if you want to use dual boot, मतलब तुम अगर करना ही है यूज डुअल बूट, देन यू कैन डू दैट इजीली. क्योंकि तुम एक हार्ड ड्राइव में से विंडोज रख सकते हो, दूसरे हार्ड ड्राइव में तुम लिनक्स में दे सकते हो, सो दैट इट वोंट मैस विथ योर विंडोज दैट मच. अगर तुम अलग अलग हार्ड ड्राइव में कर रहे हो एंड यू हैव गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, देन यू कैन डू दैट. बट बिफोर डूइंग दैट वी एडवाइज यू नो व्हाट यू आर डूइंग, और कुछ नहीं, बस दैट इज द थिंग. और when you're talking about 8 GB RAM, 8 GB RAM और वर्चुअल मशीन में, तो if much so won't stress it that much that you can't use it, you can use it. So if you don't want to go to the hassle about, अगर तुमको ड्यूअल बूट डालने का बहुत हैसल नहीं करना है, तो तुम 8 GB रैम वाले सिस्टम में भी 4 GB रेकमेंडेड ऐसे रख के तुम कर सकते हो ऐसे वर्चुअल मशीन. It won't just completely hang your system. I have used it, so I'm telling you. बट इट्स डेफिनेटली कि अगर तुमको अगर एकदम हाई यूज करना है तो देन इट बिकम्स अ लिटिल बिट दिक्कत वाला काम. बाकी तो कोई दिक्कत इतना भी ज्यादा नहीं आएगा. मतलब जैसे राइटली टोल्ड, आप थोड़ा अपने साइड से भी थोड़े 2-3 चीजें ध्यान रखो कि फॉर एग्जांपल 8 GB रैम तो गूगल क्रोम नहीं देगा, उसके साथ आप VS कोड, उसके साथ एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं खोलो, तो इट इज ऑब्वियसली फाइन कि आप 8 GB रैम वाले में भी आराम से VM वर्चुअल बॉक्स यूज कर सकते हो. सो आई हैव बीन यूजिंग दैट सिंस अबाउट अ ईयर नाउ, तो मतलब इट हैज वर्कड प्रीटी वेल फॉर मी. बट हाँ, आपको अगर 3-4 साथ में खुली रखनी है तो
either you get some higher RAM या फिर you switch to dual boot, which is still not recommended, but yes you can. या सो आई गेस ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये सिस्टम मतलब आपने देखा वैसा एक इमेज आएगा वो कैट वाला, और यू विल गेट दिस डायलॉग टू इंस्टॉल उबुंटू। So you can just click on this install Ubuntu. You can just select your language, English US, English US. Okay. Continue. हाँ, ये भी सिमिलर स्टेप है विच वी सॉ इन वर्चुअल बॉक्स। तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू कैन गो फॉर नॉर्मल इंस्टॉलेशन और मिनिमल इंस्टॉलेशन। अभी मैं सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, सो आई जस्ट गो विथ मिनिमल इंस्टॉलेशन एंड यू कैन जस्ट चेक दिस टू कंटिन्यू। ये स्टेप्स थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पीसी, मतलब किसी में जल्दी हो जाएगा, किसी में थोड़ा टाइम लगेगा। जस्ट बी पेशेंट। एंड वन थिंग टू ऐड, अभी तो वो इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, पर उसके बाद आपका उसके बाद ना दो तीन चीज हो सकती है अपने में जैसा कुछ। सो व्हाइल इट इज इंस्टॉलिंग, आई विल जस्ट क्विकली कवर दैट, और वो आपको मैं कह दूंगा कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, आप पहली बार जब इंस्टॉल करोगे उबंटू, तब ऐसा आ सकता है कि आप अगर मैक्सिमाइज करने जाए तो आपका उबंटू का वीएम वर्चुअल मशीन मैक्सिमाइज करने जाएंगे तो आपका वो कंप्लीट मैक्सिमाइज नहीं होगा। तो उसके लिए ना आपको एक दो कमांड्स चाहिए जो टर्मिनल में जाके लिखने होंगे आपको, जो आपके अभी उबंटू टर्मिनल में, एंड वी विल प्रोवाइड दैट कमांड्स इन आफ्टर दिस सेशन वेयर वी विल सेंड द डिटेल्स ऑफ हाउ टू इंस्टॉल के स्टेप्स हम भेजेंगे, उसके साथ हम कमांड्स भी भेज देंगे। And the use method, how to use that commands we have written in that, it will be written in that. So वो आप कर देख लेना। अगर दो तीन एरर बेसिकली आ सकते हैं, जैसे कि आपका पहली बात मैक्सिमाइज करते हो वर्चुअल मशीन, तो आपका पूरा लिनक्स का जो उबंटू का जो विंडो है वो पूरा मैक्सिमाइज नहीं होगा। तो उसके लिए एक कमांड करके आपको आएगा, वो भी वी विल सेंड दैट। सेकंड एरर आ सकता है, दैट इज आपका उबंटू इन जस्ट अ ऑर्डर मिनट टू। अजय, जस्ट अ मिनट, यस, ये एक स्टेप कर दो सो दैट ये इंस्टॉल होने लगे। ओके। इसमें दो ऑप्शन है, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू, एंड समथिंग एल्स मतलब ये हमें अपने से पार्टीशन करने को देगा मेमोरी का, बट दैट इज ऑल नॉट नीडेड, क्योंकि हम लोग अगर आप वर्चुअल मशीन पहली बार डाल रहे हो तो ये इरेज डिस्क मतलब अभी हमने जो वहाँ पे 20 या 30 GB जो अलोकेट की वही इरेज करेगा। ये आपका पूरा डेटा या अभी की करंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। सो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, इस झंझट में घुसने की जरूरत नहीं है पार्टीशन वाली। यू कैन सेफली चूज दिस ऑप्शन, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू। ये देख के शायद ऐसा लग सकता है दिस विल डिलीट ऑल योर प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक एंड एनी अदर फाइल्स इन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये देख के डर लग सकता है कि मेरी जो विंडोज की होस्ट सिस्टम है उसमें भी सब उड़ा देगा, बट इट वोंट बी द केस। हमने जो 20 या 30 GB इसको दी है, इसके पास उतना ही एक्सेस है, और ये जो भी झोल करेगा या जो भी करप्ट करेगा वो उतने को ही कर सकता है, 20-30 GB को ही। इंस्टॉल नाउ। सो देखो मतलब मुझे वार्निंग आ रही है वापस कि चेंजेस मतलब लग जाएंगे, और वरना ये पार्टीशन को अपने को मैन्युअली झंझट में पढ़ना पड़ेगा। तो दैट्स नॉट नीडेड एट योर लेवल। अगर आप लोग उबुंटू से मतलब बहुत ज़्यादा काम करने को आए और वर्चुअल मशीन में ही आपको यूज टू वर्क अपना करने का रहता हो तो शायद इसमें घुसना पड़े, वरना अभी के लिए जस्ट फॉर अ कोर्स या ऐसे ही
कुछ ट्राई करने के लिए वर्चुअल मशीन डाल रहे हो, then no need to go into that. You can safely choose this option, just install Ubuntu and click continue. Yes, Advait, you can go on describing the second type of error by the time this gets installed. Okay, so It's installed. first error that will happen is that maximization error. जहाँ आपका वो जो Ubuntu का जो स्क्रीन है वो मैक्सिमाइज नहीं होगा, वो उसके लिए हम वो प्रोवाइड कर देंगे मेथड और कमांड. आप वो जस्ट आपको टर्मिनल में एंटर कर देना और फिर वो जो स्टेप्स लिखे वो फॉलो करें तो हो जाएगा. Now the second error that you might face in that sometimes Ubuntu in order to prevent sudden crashes or stuff, it will convert your Ubuntu file system into read only. So that means that you can't add or write any of the edit any of the files that will be in an Ubuntu. So that will be annoying. So what you have to do is again for that a simple command is required, and by using that command again we will provide, and by using that command and following the steps that will solve the error. So basically this is the type of thing that will happen. So these are main two types of error that will happen. So, and if the second type of error may not show completely that it is read only, but what will happen is if you for example आप पहली बार अगर Ubuntu डाउनलोड करके अगर Firefox डाउनलोड उसमें डिफॉल्ट होता है Firefox ब्राउजर लिनक्स सिस्टम्स में. सो अगर आप पहली बार Ubuntu डाल के फिर ऐसे Firefox चालू करेंगे तो कुछ ऐसा एरर आ सकता है कि Firefox profiles are not set up and stuff. So that means के आपका Windows आपका सिस्टम जो है Ubuntu का वो रीड ओनली है. So that is the error, and that will be can simply solved by just entering a command, running it, and just rebooting the system. So that command वो हम आपको जब वो steps आप भेजेंगे तब आपको साथ में provide कर देंगे. Currently it will not be like optimal to show you how to use it because we don't have that error. So वो ऐसा कुछ ऐसा error हो तो हम भेज देंगे. And if more of you some have error, then you can contact us. अभी अगर पूरा शायद समझ ना आया हो तो डोंट गेट टेंस्ड, मतलब करते करते अगर हो जाए तो कोई इश्यू ही नहीं है. अगर कुछ एरर आए तो यू कैन जस्ट रेफर टू द डॉक वी आर गोइंग टू सेंड. We'll just wait for a minute until this gets complete और उसके बाद हम लोग कुछ एकदम बेसिक कमांड्स पे गो थ्रू करेंगे. So this was all, मतलब इतना होने पर लिनक्स सेटअप हो जाएगा अपने विंडोज में. Yes, okay, again after these installs you have what you do is try to restart the system, and it will tell you to remove the installation media and stuff. Just follow it and it will be done. Nothing much will be there after this. After this it will be completely installed, and then you can use it as per your use. Or okay, so it can. हाँ, तब तक किसी और को कुछ क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ हो या वर्बल इंटरेक्ट करना हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज गो अहेड. आई गेस सबके पास एक्सेस है अनम्यूट होने का, तो कुछ भी बोलना हो तो प्लीज. Audible? Yes, you are. So I wanted to ask, can we install Ubuntu on a portable hard drive or SSD? Yes, yes, you can. That is basically dual boot. So No, that is basically what that. no, that is a thing that yes, I know what you are saying, that you have to install it in a basically a different hard disk or something, and when you plug it you want to boot into Ubuntu, right? That is what you are asking, right? Yes, so that is basically what the idea behind dual boot is, and so yes, you can do that, of course. So in that you have to just install this IS. What you have to do is that you have to just burn the ISO file on that hard drive, and then what you do is go into the BIOS settings of your Windows, and then you can
choose to like boot into that hard drive specifically. When you burn the ISO file on that hard drive, then the Windows BIOS will what they can say, recognize it as a bootable software, and then you can go into BIOS, and then you can just um, make it boot into that, and then you can perform the same installation steps there. So you can do by that way. But if you want to just but first refer some video or something, and then you can do that for the BIOS and stuff. So it will make it like bootable Yes, hard drive or SSD. I'm yes, yes, yes. talking about as we install it in the hard drive, the OS, not bootable Yes. hard drive or pen drive. Okay. I want to install the OS on the SSD. Not, Yes, yes. So I don't want to make it bootable. if you So install the means bootable in the sense that if you install an entirely different OS on some external device, so be it some USB or some SSD, now Yes. that can be used only when you boot your computer using that hard drive or that USB, right? Your whatever Yes. external device is. Yes. So it is basically one and the same thing, that you install an OS in your external drive or you make it bootable. So your PC will ask you from where do you want to boot when you plug it in while starting up. Yes, yes. But I installed it on my with my device, and now I want to shift to another device, and then this Ubuntu will not show in the MBR of that device. No, I guess that should work too, because over there also, if you start up your computer and go into BIOS settings, so that will basically recognize your device as a bootable device. So whatever your external device will be, so it will not be limited to your own computer. So you can use it in other PCs as well. And the data will be stored whatever I do there, right? Yes. Yes. So Yes. that will be entirely what you can say, some PC of yours that cannot be opened unless and until you plug it into some other PC. So it and now you can also have some partitions in that external hard drive. For example, you have that of 2 TB, let's say. So you can have 1 TB and 500 and 500, whatever separations you wish to have. So over there also you can have something like C drive, D drive, and etc. But yes, then if you want to use it as some storage device on Windows, then you won't be able to use it, because now it's completely another thing. Yes, yes, got it. Hmm. भैया अगर मैं हार्ड डिस्क का पार्टीशन करें तो मतलब कैसा पार्टीशन सही रहेगा? मतलब अभी जैसे अगर इंटरनल 512 एसएसडी है हाँ, सो मतलब तुम्हारा वो जो SSD है वो completely empty है? नहीं मतलब एक्चुअली मैं अभी ले रहा हूँ एक नया पीसी इसलिए। ओके, सो लाइक इसमें ऐसा होता है कि सपोज आपका जो SSD है वो उसी पर आपका जो है विंडोज इंस्टॉल्ड है। फॉर एग्जांपल विंडोज उसी पर से बूट होता है। सो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको जो बाकी का जो विंडोज के अलावा जो एरिया है उसमें आपको पार्टीशन करना पड़ेगा, सो दैट आपका जो ग्रब जो डाउनलोड होगा उबंटू लिनक्स का जो बूट लोडर, उसके हिसाब से आपको फिर उसमें पार्टीशंस करने पड़ेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। नहीं जैसे फिर मैं वो पहले हाँ 512 जीबी एसएसडी में मैं अपने विंडोज और लिनक्स इंस्टॉल कर लूं और थोड़ा बहुत स्टफ अराउंड 100 जीबी या 120 जीबी का छोड़ दूं उसके अलावा, और उसके अलावा मैं एक एक्सटर्नल एसएसडी यूज कर लूं अपने बाकी फाइल्स के लिए जो फाइल्स वीडियोस, तो वैसे कर नहीं मतलब देखो पराग, इसमें द थिंग इज कि आपके पार्टीशंस वो डिपेंड ऑन योर यूजेज। मतलब आप पहले देखो कि आपका यूजेज क्या है। अगर लिनक्स को आपको सिर्फ एक किसी सब्जेक्ट में एक सेमेस्टर निकालने के लिए करना है, तो उसमें आप
मतलब नॉट नेसेसरी कि आप 512 का 250 सेपरेशन करो, उसका 50 GB का लिनक्स बना लो तो भी इट वुड फेयरली वर्क. सो इट डिपेंड्स ऑन योर नीड, आपको किस टाइप का परफॉर्मेंस यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लिनक्स या फ्रॉम विंडोज. एंड एज अद्वैत टोल्ड, अगर आप नया ले रहे हो तो दैट मीन्स कि ओएस अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है विंडोज ओएस. एंड हाँ इन ऑर्डर टू सेपरेट एनी ऑफ द हार्ड ड्राइव, आपके पास आपके हार्ड डिस्क में अभी फॉर एग्जांपल मान लो 2 सेपरेशन के साथ आई आपकी एसएसडी सी और डी, तो आपको किसी का भी एक सेपरेशन करना हो तो यू नीड टू फॉर्मेट द डिस्क फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट. तो अगर यू आर थिंकिंग अबाउट पार्टीशनिंग द डिस्क, तो आपको पहले अपने ओएस का बैकअप लेना पड़ेगा. विंडोज का बैकअप लो आप, एग्जिस्टिंग विंडोज का. मेक श्योर इट इज लाइसेंस, अगर वो क्रैक वैक कुछ हुआ तो देयर इज नो गारंटी कि वो वापस आएगा. तो इफ यू हैव अ गुड लाइसेंस्ड विंडोज, उसका आपको बैकअप लेना पड़ेगा. देन यू कैन पार्टीशन योर डिस्क इनटू टू और थ्री, आपको जो भी अच्छा लगे, इन वॉट एवर रेशियो यू वांट. एंड उसके बाद यू हैव टू इंस्टॉल विंडोज वापस एक पार्ट में, एंड लिनक्स इन द सेकंड पार्ट. So it's No, I not guess it works not possible, without but that also, without installing Windows again. Yes, it works, but taking a backup is always good, because what you are doing is you are currently trying to make Windows boot manager inside of the grub boot manager. So it might happen ki you might mess up. So you don't need to install the Windows again. That is right, but taking a backup is always good, and you can always install in the same hard drive. But then you have to take care of you don't mess up with the Windows partition. Windows partition, and that is the exactly. first thing you have to take care of. And that also depends from manufacturer to manufacturer. So the BIOS settings of some Lenovo laptop might not work equally as compared to some Dell laptop. So now you are going into the hardware stuff, and one step deeper apart from the OS. So that's the basic reason. Yeah, so we can go ahead with the commands part. The installation is complete and it's asking for a restart. ये restart मतलब मेरा पूरा PC restart नहीं होगा, it will just restart the virtual machine. हेलो भैया, मेरा क्वेश्चन था. हाँ बोलो. अगर मैं मतलब मेरे पास अगर एसएसडी है मतलब उसमें, तो उसमें मैं वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करूँ तो मतलब उसमें तो कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा नहीं. एसएसडी वर्चुअल बॉक्स इज जस्ट लाइक, तुम वर्चुअल बॉक्स की बात करो ना, वर्चुअल बॉक्स इज जस्ट लाइक हाँ. एन अनदर ऐप यू आर इंस्टॉलिंग ऑन योर विंडोज, एंड दैट ऐप यू आर यूजिंग टू just use another different OS in the virtual machine. So उसमें तुम SSD केस में करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. It will be just like downloading a game. बस उसमें बस आपको गेम के बदले ये है. What when the SSD stuff matters is जब आप उसके साथ एक अलग पूरा OS डालने की ट्राई करें, not as a virtual machine, but as a different whole OS, तब वो फर्क पड़ता है SSD वो सब में, ऐसे डिस्क से ऐसा कुछ. ओके, थैंक यू. और भैया ये मेरा एक फ्रेंड है, मतलब वो WSL यूज कर रहा था, तो मतलब वो सेम है क्या इन सब से? WSL इज द स्टफ दैट, उसमें क्या जो अभी जो WSL है उसमें हाँ. आप लिनक्स के फाइल सिस्टम जो है, लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है जैसे होम रूट वो सब, तो आप उस टाइप ऑफ फाइल सिस्टम में वर्क कर सकते हो. एंड ओके. उसमें वर्क कर सकते हो. दैट डेफिनेटली जस्ट मीन्स कि आप लिनक्स का फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो. यू आर नॉट Okay. यूजिंग द लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट. इट जस्ट मीन्स यू आर यूजिंग द लिनक्स फाइल सिस्टम. आप जो राइट. ये Ubuntu है वो दैट इज द फाइल सिस्टम along with the desktop environment. that वो आप सब जो UI देख रहे हो, दिस इज लाइक राइट. अनदर लाइक ऐसा लिनक्स Ubuntu ऐसा होगा, वो ऐसा अलग फाइल सिस्टम है WSL. यू कैन यूज दैट डेफिनेटली, बट वो क्या आएगा कि फिर वो एज अ बिगिनर ना वो दिक्कत आ जाएगा कि समझने में ठीक सारी चीजें. एज अ ओके. बिगिनर WSL इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड टू डू. हाँ नहीं, मतलब डिवाइस थोड़ा सा स्लो था तो इसके लिए मैंने मतलब सोचा, क्योंकि ड्यूअल बूटिंग इज लाइक डिवाइस बिट डिफिकल्ट. यस बट डिफिकल्ट, राइट. बट क्या है कि ड्यूअल बूटिंग अगर आपका डिवाइस लो है तो ड्यूअल बूटिंग इज डिफिकल्ट बट इक्वली रिवॉर्डिंग. बट वो आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान राइट. रखना पड़ता एक है बार और हो कुछ नहीं. जाता है तो फिर रिवॉर्डिंग है. राइट. ओके, थैंक यू. हाँ. हाँ ठीक है, मतलब ये पूरा सेटअप हो गया, अपना इंस्टॉल सब हो गया. अब वी आर रेडी टू यूज Ubuntu सिस्टम. तो अपने मैंने MSTC नाम दिया था बनाते वक्त, इसलिए इधर MSTC है.
और पासवर्ड भी मैंने वही रखा था, तो mstc एंटर। अभी के लिए हम लोग बस थोड़े बहुत जो बेसिक कमांड्स है उस पर फटाफट गो थ्रू करेंगे। उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो जस्ट टाइप इट इन द चैट या खत्म करने के बाद पूछ लेना वो। हाँ, सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड, मतलब किसी भी कमांड तक पहुंचने का एक जरिया, एक मैन कमांड। नॉर्मली एक हेल्प जो होता है, शायद आपने मैटलैब में सुना हो, हेल्प करके एक होता है, और फर्स्ट ईयर वालों ने शायद वो भी नहीं सुना होगा। लेट्स से मुझे printf का सिंटेक्स जानना है, तो आई जस्ट राइट मैन printf, उसका सिंटेक्स आ गया। फिर एक लिनक्स कमांड है ls, उसका सिंटेक्स मुझे जानना है, तो मैन ls, उसका सिंटेक्स आ गया। सिंटेक्स कैसे यूज करते हैं, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, सब कुछ आ जाएगा। तो मैन मतलब क्या, मैन स्टैंड्स फॉर मैनुअल, कि उसका मैनुअल क्या बोलता है। फिर एक है pwd कमांड, तो उसका देखे तो पूरा उसका आ गया डिस्क्रिप्शन। तो ऐसा कभी भी अगर नया कमांड आपके सामने आए या ऐसा कुछ लगे कि ऐसा कुछ सुना नहीं है, तो एक चीज तो गूगल कर सकते हो, और गूगल शायद नेट अवेलेबल ना हो या ठीक से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ना हो, गूगल से ना जानना हो, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इधर से मिल जाएगा। मैन करके कमांड नेम, यू कैन जस्ट राइट इट हियर। ठीक है, बाकी लेट्स जस्ट गो थ्रू सम बेसिक कमांड्स। तो उसके लिए मैं एक दो फाइल टेस्ट करने के लिए बना देता हूँ। ठीक है, एक मैंने फोल्डर बना दिया डेस्कटॉप पे टेस्टिंग करके। अब ये टर्मिनल, हाँ, अब एक है cd कमांड। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। अभी मैं पूरे सिस्टम के बाहर हूँ, मैं इधर हूँ, मुझे माइग्रेट कहाँ करना है, डेस्कटॉप और उसके बाद टेस्टिंग में। तो cd से मैं जाऊंगा डेस्कटॉप, आ गया, और उसके बाद cd करके वापस मैंने जो नया फोल्डर बनाया उसमें cd टेस्टिंग। अब cd से आगे जा सकते हैं ऐसा डायरेक्टरी रूट में, पीछे जाना हो तो क्या करेंगे, ऐसा पीछे आ गए, देखो टेस्टिंग से बाहर निकल के वापस डेस्कटॉप में आ गए। वापस टेस्टिंग में घुसने के लिए cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद लेट्स से इधर में कुछ फाइल्स बनानी है मुझे, तो एक ऑप्शन तो है कि इधर जाके मैं एक्चुअल में फाइल्स बनाऊँ एडिटर में, इस फोल्डर में घुस के। दूसरा ऑप्शन है इधर अपने टर्मिनल से भी बना सकते हैं यूजिंग टच कमांड। लेट्स से टच abc ऐसी फाइल बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो एक फाइल बन गई abc। लेट्स से टच a.txt, एक txt फाइल बन जाएगी। ओके, ये खुलेगी, पूरी ब्लैंक फाइल बनी होगी ये। अब लेट्स से मुझे जानना है कि इस फाइल में क्या है। अभी के लिए ब्लैंक है, मैं कुछ सैंपल के लिए इधर लिख देता हूँ, mstc लेट से लिखा। अब मुझे फाइल ओपन करे बिना जानना है कि इस फाइल में क्या लिखा है। उसके लिए वी हैव कैट कमांड। कैट करके मैंने शायद abc फाइल में लिखा, नहीं a.txt में मैंने लिखा, तो कैट a.txt आ गया mstc। तो अगर पूरी बड़ी फाइल होगी तो उसका पूरा कंटेंट इधर टर्मिनल पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो कैट कमांड बेसिकली जो भी फाइल आप इनपुट में रखोगे उसका कंटेंट डिस्प्ले करेगा। अब मुझे मान लो कि जानना है कि मैं जिस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, दैट इज टेस्टिंग, उसमें कौन से फाइल्स और फोल्डर्स प्रेजेंट है। तो उसके लिए वी हैव ls कमांड। इधर अगर कुछ फोल्डर या और भी फाइल्स होते तो सबका लिस्ट इधर आ जाता, abc a.txt करते करते सब कुछ। अब ये तो ठीक है कि अंदर की बात पता चली, अब मैं कहाँ काम कर रहा हूँ ये मुझे जानना है। इधर देखे बिना सिर्फ टर्मिनल से मुझे जानना है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का नाम क्या है। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd, इतना बस लिखोगे तो नाम आ जाएगा कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, होम mstc डेस्कटॉप टेस्टिंग। उसके बाद लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ फोल्डर। अब फाइल बनाना तो हमने देखा कि हमने टच कमांड से अपने फाइल बना सकते हैं abc.txt।
अब फोल्डर भी बनाने के दो तरीके हैं। एक तो अपने नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे इधर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करके, बट ये तो ठीक है, देसी तरीका है। ये टर्मिनल सीखे है तो कुछ इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। इधर जैसे टच से बनाया वैसे इधर मेक डी आई आर, और लेट से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ अदित, मेक डी आई आर अदित, तो एक फोल्डर आ गया मेक डी आई आर अदित। अब इसके अंदर वापस मैं सीढ़ी से नेविगेट कर सकता हूँ इफ आई वांट। ठीक है, गया वापस आया। अब अगर बना सकते हैं तो रिमूव करने का भी कोई ऑप्शन होना चाहिए इसे, रिमूव और इवन रीनेम। लेट से मुझे रीनेम करना है एबीसी को, मुझे अब एबीसी नहीं DEF बनाना है, तो रिमूव करने के लिए देर इज दिस mv कमांड abc def, रीनेम हो जाएगा। देखो अब लेट से कॉपी करना है, तो कॉपी के लिए वी हैव cp कमांड cp, और ये जो मेरी डी फाइल है उसको मुझे एक कॉपी बनानी है pqr करके। तो इसमें जो भी कंटेंट्स है वो कॉपी होके इधर आ जाएंगे। इट्स सिमिलर टू, मतलब यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करें उसके जैसा ही है, ये बस टर्मिनल से किया। और ये ठीक है, हमने देखा कि कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो अब डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कैसे करेंगे? rm से, rm def लिखोगे उड़ जाएगा, गया def। अब जैसे फाइल को डिलीट किया वैसे फोल्डर को भी डिलीट करने का कुछ रास्ता होगा। फोल्डर जैसे हमने मेक dir से बनाया था वैसे फोल्डर भी डिलीट होता होगा। सेम rm dir और फोल्डर का नाम, देखो फोल्डर भी गायब हो गया। तो मतलब बेसिकली इधर छुए बिना मैं पूरा शेल से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, फाइल बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ फाइल में क्या है, रीनेम कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ। अब मान लो मेरी इच्छा हुई कि वर्ड काउंट जानना है मुझे कि इस फाइल में a.txt में कितने वर्ड्स है, उसके लिए आई जस्ट राइट wc a.txt। वैसे अगर फाइल खोल के गिनने बैठेंगे मैन्युअली तो बहुत टाइम निकल जाएगा, ये शेल पूरा अपने को इधर से ही देगा। ये 115 a.txt का मतलब क्या है? वन मतलब एक लाइन, ये वन मतलब एक वर्ड। उसमें देखो MSTC एक ही था, तो लाइन भी एक थी, वर्ड भी एक था। तो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ लाइंस, सेकंड डिजिट स्टैंड्स फॉर, सेकंड नंबर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वर्ड्स, और दिस इज द नंबर ऑफ बाइट्स। 5 ये नंबर ऑफ बाइट्स है, तो टोटल फाइल कितना बाइट्स किया वो भी WC से अपने को पता चल जाएगा। अब मान लो मुझे बस इधर कुछ शेल पे ऐसे ही मेरी मर्जी का कुछ लिखवाना है, लेट्स से इको MSTC। तो इधर इको करके मैं जो भी लिखूंगा ना वो इधर शेल पे आ जाएगा, जो भी लिखूं मैं, ठीक है। और इसके बाद वन लास्ट कमांड, ये तो ठीक है कुछ मतलब ऐसे बेसिक कमांड है। इसके बाद एक chmod करके एक कमांड होता है जिसकी मदद से हम लोग एक्सेस परमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अभी तक ये ठीक है, हमने बेसिक चीजें देखी। अब इसके अलावा रीड राइट और वो सब एक्सेस भी होते हैं कि किसी को रीड एक्सेस होता है, किसी को राइट एक्सेस होता है, किसी को रीड राइट एक्सिक्यूट दोनों तीनों एक्सेस होते हैं। तो मतलब बेसिकली अपने पास रीड राइट एक्सिक्यूट ये तीन टाइप्स है। उसके बाद कुछ यूजर्स होंगे जिनके पास रीड राइट, रीड एक्सिक्यूट और राइट एक्सिक्यूट ऐसे एक्सेस होंगे। और एक यूजर ऐसा भी हो सकता है जिसके पास तीनों हो, रीड राइट एक्सिक्यूट। तो टोटल 7 कॉम्बिनेशन हुए, ओनली रीड, ओनली राइट, ओनली एक्सिक्यूट, रीड एंड राइट, रीड एंड एक्सिक्यूट, राइट एंड एक्सिक्यूट, रीड राइट एक्सिक्यूट। तो ऐसे 7 टाइप से एक्सेस दे सकते हैं हम किसी भी फाइल का। तो उसके लिए एक्सेस देना है तो मुझे, मैं 3 पार्ट्स में इसे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। लेट्स से chmod, मतलब कि ये एक्सेस परमिशन डिफाइन करने के लिए है। तो यू मतलब यूजर के पास तीनों एक्सेस है, RWX मतलब रीड राइट एक्सेस। ग्रुप के पास रीड और एक्सिक्यूट एक्सेस है, मतलब वो लोग राइट नहीं कर सकते बट मेरे ग्रुप वाले लोग देख सकते हैं और इसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। और बाहर के जो लोग हैं दे कैन जस्ट राइट, सॉरी दे कैन जस्ट रीड। तो O मतलब अदर्स, G मतलब ग्रुप। और ये एक्सेस परमिशन मुझे किस फाइल पर लगानी है? लेट्स से a.txt पर, तो वो फाइल का नाम, शायद सिंटेक्स में कुछ गलती की हमने।
हाँ, वी मिस द कॉमर्स। देखो, मतलब इसकी अब परमिशन चेंज हो गई a.txt की, कि यूजर के पास रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों, ग्रुप के पास रीड एग्जीक्यूट और अदर्स के पास रीड। ये चीज अभी समझ ना आए तो यू कैन जस्ट इग्नोर दिस स्टफ। ये बस ध्यान में रखना कि ऐसा कुछ होता है। ये जैसे जैसे आप लिनक्स के साथ यूज टू होते जाओगे वैसे वैसे समझ आने लगेगा। अभी के लिए ये बेसिक्स कमांड भी अगर समझ आते हैं तो इट्स मोर देन गुड। सो आई गेस यस दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। मतलब हमने बेसिकली आज के सेशन में 3 मेथड समझे, एक वर्चुअल बॉक्स, एक वर्कस्टेशन प्लेयर और एक डुअल बूट। और उसके बाद ये कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में जाना। दिस इज द मतलब किंग ऑफ ऑल कमांड्स, कि इससे अपने किसी भी कमांड के बारे में जान सकते हैं। और बाकी हाँ, ये सब कमांड्स भी डे टू डे अगर लिनक्स यूज करते हो तो बहुत काम आएंगे। cp mv rmdir pwd ये सब। ठीक है, नाउ वुड लाइक टू ओपन द फ्लोर फॉर द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन शायद आए हुए हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम देम। इसके अलावा किसी को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछने हो तो प्लीज गो अहेड। आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग Hello? माय स्क्रीन। Okay. यस, यस गो अहेड। I got the answer in chat. Oh, all right. Now we have planned something for you. Yeah, like just before moving to the questions, हमने क्विज जैसा मतलब कुछ प्लान किया है कि जिसका क्वेश्चन हम लोग इधर चैट बॉक्स में डालेंगे एंड वन वो रिप्लाइज फर्स्ट द मतलब वो उसको उसके लिए वी हैव सम गुडीज अरेंज। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस आएंगे, चैट में क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन मैं वर्बली भी एक्सप्लेन करूंगा। एंड वन वो रिप्लाइज द फास्टेस्ट ऑन चैट। चैट पे अगर आप लोग आंसर लिखोगे तो टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड होगा, और जिसका सबसे पहले करेक्ट आंसर आएगा ही विल बी एलिजिबल, ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर गुडीज। just just a minute, I'll post that question in the chat. ऐसे 2 क्वेश्चंस है एंड आई बी पोस्टिंग them वन बाय वन। ठीक है, एवरीवन रेडी? चैट विथ एवरीवन में लिखना अपना आंसर। ऐसा हो तो अभी से सिलेक्ट करके रख दो चैट में टू एवरीवन। ऐसा आपका जो भी आंसर हो चैट विथ एवरीवन में लिखना। ठीक है, आई एम पोस्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। 3 2 1। दो क्वेश्चन है, बी केयरफुल। सबसे पहले पूछा है कि 16 GB रैम वाला पीसी हो तो डुअल बूट या वर्चुअल मशीन, और 16 GB की जगह अगर 8 GB वाला पीसी हो तो कौन सा? Yes, come on folks, keep posting your answers. ठीक है, so you have got multiple permutations for the answers. Dual, virtual, dual, virtual, virtual, dual. The correct answer is
16 GB वाले के लिए इट्स प्रेफरेबल टू गो फॉर वर्चुअल मशीन, और 8 GB वाले के लिए डुअल बूट। आई गेस किसी को डाउट है इसमें, ऐसा क्यों? तो पूछ लो अभी, इसके बाद विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मेरे डाउट है। हाँ बोलो बोलो। मतलब अगर मतलब एक तरीके से अपन अपना रैम कभी भी तो डिवाइड करना है, अगर अपने पास इनफ स्टोरेज है तो अपन मतलब रैम तो डिवाइड करना कभी नहीं चाहेंगे ना, मतलब तो फिर अपन हमारे पास इनफ, हाँ बोल बोल, इनफ स्टोरेज है तो इनफ स्टोरेज है और मैं चाहूँ कि मेरा पीसी हमेशा 16 GB रैम पे ही चले, तो फिर उस केस में दोनों में ड्यूल बूट यूज करेंगे ना मतलब। अरे कर तो सकते हैं, दोनों में डुअल बूट कर सकते हैं, बट जैसा हमने मतलब पहले बात की कि डुअल बूट का सेटअप और वो सब करना इट्स मच टीडियस। और अगर आपको दो एस एक साथ यूज करने हैं कि कभी इधर की फाइल उधर यूज करनी है, उधर की फाइल इधर यूज करनी है, तो ऐसा डुअल बूट में नहीं हो पाएगा। मतलब 8 GB में तो क्या है कि डुअल बूट इज काइंड ऑफ मजबूरी। उसमें भी अद्वैत ने बोला ऐसा जबरदस्ती डाल सकते हैं वर्चुअल बॉक्स या ऐसा, बट द क्वेश्चन वॉज कि कौन सा प्रिफरेबल है। तो 16 GB रैम वाले में अगर अपने वर्चुअल मशीन डालते हैं तो दोनों ऑप्शन अपने लिए खुले रहेंगे कि पीसी स्लो भी नहीं होगा, मैं सिर्फ लिनक्स पे भी काम कर सकता हूँ, और दोनों के बीच में अगर मुझे कुछ फाइल्स इधर से उधर करनी है तो भी कर सकता हूँ। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बोलूँ तो आई गेस बीटेक सेकंड ईयर पीपल वुड बी एबल टू रिलेट दिस। आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की लाइफ में अभी काफी बार ऐसा होगा कि आपकी फाइल्स होगी वो मेन होस्ट विंडोज पे होगी, और उसको आपको उधर ले जाने की जरूरत पड़ेगी वर्चुअल मशीन पे। तो इसमें अगर डुअल बूट या ऐसा हो तो पूरा आपको उधर ही रखना पड़ेगा डुअल बूट वाले में, या तो कुछ फाइल्स इधर विंडोज में जो डाउनलोड करिए वो उधर फिर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नॉर्मल पर्पस के लिए तो विंडोज यूज कर रहे होंगे। जबकि अगर आपके पास वर्चुअल मशीन हो तो आप दोनों एक साथ रख सकते हो, मतलब आपकी फाइल्स भले इधर हो, आपको जब जरूरत पड़े तब एक फाइल उठा के इधर डाल दी। और इसमें एटलीस्ट जब तक वर्कस्टेशन प्लेयर कंसर्न है उसमें कॉपी पेस्ट होता है। मतलब मैं इधर विंडोज से अगर कुछ फाइल या कुछ भी टेक्स्ट कॉपी करके वहां जाके कंट्रोल व्यू करूँ वर्चुअल मशीन में तो होता है। या सो आई गेस एज द क्वेश्चन वाज प्रिफरेबल, कौन सा हो सकता है ऐसा नहीं था, दैट्स व्हाई द आंसर इज वर्चुअल मशीन एंड डुअल बूट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार भी चैट विथ एवरीवन सब लोग सिलेक्ट करके रखना। आई एम रिलीजिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 2 1। इसमें सब पार्ट नहीं है, इग्नोर द लास्ट स्टेटमेंट। हाँ इसमें सब पार्ट नहीं है, एक ही क्वेश्चन। यस आई गेस वी हैव गॉट अवर करेक्ट आंसर इन द वेरी फर्स्ट शॉट, और इस बार तो शायद सबने करेक्ट लिखा है। मैन स्पेस XYZ इज द करेक्ट आंसर, एंड आई गेस सागर वरिया इज द फर्स्ट टू आंसर इट। ऊपर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले करेक्ट किसने दिया था?